हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगाम। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़, चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विस बुक, चैप्टर फर्स्ट। इसका सब टॉपिक है आज व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Constitution of India in general. Constitution of India is considered to be the supreme law of the country, as it puts forth the framework of fundamental political principles. It establishes the structure, procedures, powers and duties of the government and mention the fundamental rights, directive principles and duties of citizens. The Constitution declares India as a sovereign, socialist, democratic and republic with a parliamentary form of government. The Indian Constitution shows federal as well as unitary system. First one is federal system. Power are divided and are shared between states and central government. ये शेयर किए जाते हैं किन के बीच में? स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। यूनियन सिस्टम, पावर concentration in central government with weak state government. फर्स्ट पहले हम डिस्कस करेंगे कि फेडरल फीचर्स में क्या आता है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड स्टेट, and third one, the existence of an independent judiciary in the Indian Constitution. और दूसरा है यूनिटरी फीचर्स। पहला इसमें है सिंगल सिटीजन, सेकंड है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड वन इज पावर ऑफ यूनियन टू ओवरराइड ऑन द स्टेट मैटर्स. During emergency, the system became virtual unitary. Change in the name and boundaries of the states of the parliament. After that, integrated judiciary system. फिर आता है center appoints the government. और उसके बाद आता है dependence of states on the center for economic assistance and grants. Structure of Constitution of India. The Constitution in its current form, March 2011, consists of first preamble, फर्स्ट हो गया प्रेम्बल, ठीक है। सेकंड है फिर 25 पार्ट्स कंटेनिंग 450 आर्टिकल्स. आफ्टर दैट 12 शेड्यूल्स. आफ्टर दैट 2 अप्रोच हो गया यहाँ पे 2 अप्रोच. और फिर क्या है 2 अप्रोच आफ्टर दैट and 97 amendments. 97 amendments to date. Although it is federal in nature, it also has a strong unitary base. Different
एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। पहला क्या था? प्रेम्बल। The preamble is the Constitution of India is a brief introductory statement that sets out the guiding purpose and principles of the document. और दूसरा parts 25, the individual articles of the Constitution are grouped together into the following parts. First है union territory, citizenship, आफ्टर दैट फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स क्या हैं, हमारे हक क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, द यूनियन, द स्टेट्स इन द 8 पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, रिपीटेड, द यूनियन टेरिटरी, द पंचायत्स, फिर है द म्यूनसिपैलिटीज़, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नॉट इफेक्टिव येट। 12th है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़। 13th है रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। उसके बाद 14th है पार्ट जो इसका 12 हो गया, ये वाला पार्ट 12, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वीट्स। फिर है 13th, इधर से ये 14th नंबर वाला, ये वाला हो गया ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 16th, सर्विसेज under the union and the states. 70, tribunals, elections, special provisions relating to certain classes, language, emergency provisions, miscellaneous, amendment of the constitution, temporary transitional and special provisions, short title, date of commencement, authoritative text in Hindi and repeats. Article 1 to 450, it is subcategory of different parts in the constitution which contains detailed information of the subject or the title which an article represents. Amendments 97, ये सब ये वाला डिस्कस कर रहे हैं हम, ये सारा डिस्कस कर रहे हैं हम। Amendment 97, amendment of the Constitution of India is the process of making change to the nation's fundamental laws. Change to the Indian Constitution are made by the Federal Parliament. The procedure is laid out in Part 20, Article 368 of the Constitution. Schedule 12. Schedules are lists in the Constitution that categorize and tabulate bureaucratic activity and policy of the government. Appendices 2. They are extension to the Constitution. Fundamentals Rights, Part 3rd, Article 12 to 35. The word fundamental suggests that these rights are so important that the Constitution has separately listed them and made special provision for their protection. क्या है कि जो वर्ड फंडामेंटल है ये दिखाता है, ये सजेस्ट करता है कि जो ये राइट है ये इतना इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, इससे इसके लिए सेपरेट बना है, लिस्टेड, इसमें सेपरेट लिस्ट्स हैं देन इनके, और मेड स्पेशल प्रोविज़न फॉर, और इसकी प्रोटेक्शन के लिए ख़ास अहमियत दी गई है, स्पेशल प्रोविज़न है। द फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट, ये इतने इम्पॉर्टेंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट सेल्फ इंश्योर्स दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट।
ये इतने इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स कि इसको गवर्नमेंट भी वायलेट नहीं कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल टू अस। जो हमारे बेसिक राइट्स हैं हमारे, वो डिफरेंट हैं दूसरे राइट्स जो हमें अवेलेबल हैं। वाइल ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ, fundamental rights are protected and guaranteed by the constitution of the country। जो फंडामेंटल राइट्स है इनकी जो प्रोटेक्शन है और गारंटी दी गई है किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द country। The Constitution of India recognize certain basic fundamental rights for every citizen of India, जैसे कि right of equality, right to freedom of religion, right against exploitation, अगर कोई आपको तंग करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा, cultural and educational rights, right to constitutional रेमेडीज। ठीक है, ordinary rights may be changed by the legislature by ordinary process of law making, but a fundamental right may only be changed by amending the constitution itself। कहने का मतलब है कि जो ऑर्डिनरी राइट्स हैं वो चेंज हो जा सकते हैं, किए जाते हैं लेजिस्लेचर बाय किसी भी ऑर्डिनरी प्रोसेस से वो चेंज हो सकते हैं, लॉ मेकिंग जो कानून बनता है जी। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये चेंज हो सकते हैं अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर अमेंडमेंट की जाए कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ। बिसाइड्स दिस नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्ट इन ए मैनर दैट वायलेट्स देम। कोई भी नहीं कर सकता है इसको चेंज, किसको? फंडामेंटल राइट्स को। एनी infringement of fundamental rights can be challenged by any citizen of India in the court of law। Any infringement of fundamental rights can be challenged by any citizen of India in the court of law। The Constitution of India also prescribes some fundamental duties on every citizen in India। जिस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें रिलीजन की फ्रीडम चाहिए, या हमारे बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें चाहिए, तो इसी तरह से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या आ जाता है? पार्ट 4 आर्टिकल 551A। These fundamental rights have been provided at the cost of some fundamental duties। These are considered as the duties that must be and should be performed by every citizen of India। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको कंसिडर किया गया है कि ये हमें परफॉर्म करनी है, हर एक सिटीज़न को ये परफॉर्म कर। These fundamental duties are defined as it shall be the duty of every citizens of India। हर एक शहरी की ये क्या है? ड्यूटी है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है कि अबाइड मानना है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom, to defend the country and render national service when called upon to do so। ठीक है, the promote harmony and the spirit of common brotherhood, भाईचारा रखना है। the value and preserve the rich heritage of our composite कल्चर, जो हमारी विरासत है उसको प्रिजर्व रखना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट, हमें किसकी प्रोटेक्शन करनी है? नेशनल एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। उसके बाद आ जाता है टू सेव गार्ड
public property and to abjure violence. हमें किसकी हिफाजत करनी है? पब्लिक प्रॉपर्टी की, और हमें सेफ गार्ड करना है वायलेंस को एजोर करना है, वायलेंस नहीं करना है. टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड collective activity so that the nations constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. ठीक है. Directive principles part 4 article 36 से लेकर 51 तक. It provides the social and economic basis of general. It provides the social and economic basis of a genuine democracy. The classification of these are as follows: socio-economic principles, liberal principles, Gandhian principles, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स. सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में क्या क्या आ जाता है? आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल एंड्योर टू formulate such social system which will secure social, economic and political justice to all the spheres of life. Article 39A. The state shall try to formulate its policies in such a manner so as to secure adequate means of livelihood for all its citizens. ठीक है. क्या मतलब है इसका? कि जो आर्टिकल 38A है, सॉरी 39A है, जो ये आर्टिकल 39A है, द स्टेट शैल ट्राई टू फॉर्मुलेट इट्स पॉलिसी इन सच ए मैनर सो एज टू सिक्योर एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. जो ज़िंदगी बसर करने के जो ज़रिया है उनको सब सिटीजन्स के लिए सिक्योर करना है. आर्टिकल 39B. द ownership of material resources would be controlled in such a manner so as to subserve the common good. Article 39C. The economy of the state will be administered in such a manner so that wealth may not yield be concentrated in a few hands. Administered in such a manner so that wealth may not yet be concentrated, कुछ ही हाथों में नहीं होनी चाहिए, and the means of production may not be used against the public interest. public interest के खिलाफ नहीं होना चाहिए. Article 41 of the Indian Constitution. The state will work within the limits. जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, इसमें जो स्टेट है वो विद इन लिमिट्स काम करनी चाहिए ऑफ इट्स इकोनॉमिक वैलिबिलिटी एंड प्रोग्रेस प्रोवाइड टू द सिटीजन्स. Citizens the right to work, the right to education and general assistance in the event of unemployment, old age, disease and other disabilities. Article 42 of the Indian Constitution. The state will make provisions for the creation of just and human conditions of work. It will also ensure maternity relief. Article 43 of the Indian Constitution. The state will ensure adequate wage, good life and rest to the laborers. The state will also endeavor
to make available to the laborers various social cultural facilities. Liberal principles. Article 44 of the Indian Constitution. The state shall endeavour to formulate and implement a uniform civil code for all the people living throughout the territory of India. Article 45 of the Indian Constitution. The state shall endeavour to provide early childhood care and education for all the children until they complete the age of 6 years. 6 साल की उम्र एज कंप्लीट करने के तक उनको करने के बाद उनको क्या चाहिए? आर्टिकल 45 में ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो स्टेट है शल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन मिलनी चाहिए हर एक बच्चे को. आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द स्टेट शल strive to raise the level of nutrition and the standard of living. अच्छी डाइट मिलनी चाहिए, न्यूट्रिशनल डाइट मिलनी चाहिए और स्टैंडर्ड जो है लिविंग का वो उनका अच्छा होना चाहिए. Thus it will endeavour to improve upon the health of the people. सेहत का ख्याल भी रखना है. ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है. आर्टिकल 48 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द स्टेट शल स्ट्राइव टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक lines. It will also try to maintain and improve upon the breed of the animals. Article 50 of the Indian Constitution. The state will try to separate the judiciary from the executive in the case of public services. तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है. तो नेक्स्ट हम जाएंगे. आज हम इतना. तो नेक्स्ट वीडियो में हम गांधीयन प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे. तो आगे भी हमारा टॉपिक चलेगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.